each and every one on Super Grats YouTube channel. I'm going to read out a quote for each and every one, and that's being written by a Provinfree. She says, the more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate. And there's a day of celebration because our dear child Surya has made immensely big by getting All India rank 9th in IPM Indore this particular year. एंड मैं स्पेशल मेंशन सबसे पहले इस पर्टिकुलर एपिसोड में एक मेंटर का करना चाहूंगा जिन्होंने हैंड होल्ड किया सूर्या को. शी इज अ मेंटर हु इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ आवर इंदौर सेंटर, राना मैम. बिकॉज आई नो ये एक ऐसी करिश्माई जोड़ी थी जिन्होंने दोनों ने मिलकर इस पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट को निकाला है. आई गॉट टू नो फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल कि सूर्या बहुत पर्टिकुलर थी मेंटरशिप लेने के लिए राना मैम से हर पॉइंट ऑफ टाइम पर. और राना मैम एक तरफ थी, दूसरी तरफ प्रणीता मैम थी. बिकॉज सडनली मदर का रोल इतना बड़ा रोल होता है वो हमें बाद में पता पड़ा. शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 9th एंड शी इज अ हैप्पी मॉम ओवर हियर. एंड नॉट ओनली मॉम, शी इज एमडी ऑफ अ फार्मास्यूटिकल फर्म. सो मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर मॉम का रोल निभा रहे हो मैम आप यहाँ पर. दोनों रोल्स में बहुत differences हैं. But how do you feel right now when your child has got All India ranked 9th right now in Indore? Very happy. First Yeah. of all, thank you everyone. And I'm very happy because it's a dream college for her. Indore is dream for her. And actually she last year she got IIP Kapinada also, but she dropped that point and she fight for this year also. So that means actually she lost one place and fight for another. It's very difficult for me also. A fantastic thing being said, and I can see that expression on your face more than the words. जो एक मम्मी के चेहरे पर जो खुशी आती है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आती है. तो मैंने पहले सोचा कि मैं प्रणिता मैम से पूछूं, बट यस सूर्या, ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस टू यू. एंड हाउ डिड यू फील दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन रिजल्ट वाज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन? That, that felt nice. It was amazing to know that what I have worked hard for was something that turned to reality. Did it make you emotional? Yeah, it's too emotional moment also. It was an emotional moment. Okay. I would like to understand what motivated you to join Super Grats and how this journey actually started. कहाँ से start हुई? If you can throw some light on that particular journey. तो मैं पिछले साल से ही प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ. एंड दिस ईयर आई वांटेड टू मेक श्योर कि कोचिंग बेस्ट हो. तो there was a friend of mine, she did the demos at everywhere and then she finalized Super Grats. That's when we joined. Right. And what exactly happened in the journey and everything? Who all supported? Who are the mentors over there? Because, I got to know that you have been a very, an everyday student of Indore Center of Super Grats. And what exactly was happening over there? If you can throw some light. थोड़ा थोड़ा बता दो. I know that सूर्य कम बोलती है, but yes, यहाँ पर मैं चाहता हूँ सूर्या से बुलवाना. Yes, Surya. The faculty was very wonderful, right from Aarti ma'am who brought us in, and Priyanka ma'am was there at reception every day. Apart from which, the faculty was really helpful. My sir, Brinda ma'am, they were very supportive. आगे से बोलते थे ये करो वो करो. They guided throughout, and the teaching faculty really helped. Was very supportive and motivating throughout. All right. I would also like to, ask you this particular thing. Was there any particular section that bothered you during this particular journey, and how did you overcome that particular thing? Maths, I'm not afraid of maths. I'm good at it, but मेरा थोड़ा स्पीड का प्रॉब्लम है. अच्छा. तो शॉर्ट आंसर हो जाता था पर एमसीक्यू में दिक्कत आता था क्योंकि यू हैव टू डू मच मोर देन शॉर्ट आंसर होता है. ज्यादा क्वेश्चंस भी करने पड़ते पर टाइम लिमिट सेम रहता है. तो उधर का मेरे को बहुत बार दिक्कत आता था. उधर का मेरे को टेंशन भी था कि कट ऑफ निकलेगा नहीं. दैट वाज वन. So mathematics certainly was a bit difficult for her, but yes, in specifically speed part of mathematics as she's telling us over here. Would you mind asking me what was your score? I mean, breakup क्या था score का उस point of time पर? मॉक्स में कि एक्चुअल नहीं नहीं, एग्जाम. in the IPMAT Indore examination. IPMAT it was short answer में 40, Okay, MCQ में 79 and verbal ability में 130. okay, all right. So great. One thing I would like to tell to the student audiences over here, she is
making her place in a single digit rank. तो मैंने एक चीज नोटिस करी है, काफी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते फर्स्ट से लेकर नाइन्थ के बीच में, हार्डली 1 or 2 marks when actually सम टोटल आता है तो. एंड certainly rank 9 is commendable. It's equivalent to rank 1 or 2 over here. So heartiest congratulations from entire team Super Grats. You have made us proud. You're the flag bearer of our team over here, of Indore, of our entire team over here. Uh, yes, ma'am, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, during this particular journey when Surya was preparing, what changes did you observe in her? क्या चेंज बोलेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल, All right, उसके जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था, और जो मीन्स कमिटमेंट था अपने आप से, उसने वो अचीव करने की वो जो स्टैमिना था वो भी बहुत बढ़ गया था उसके से। all right. बहुत ही बड़ा था कि उसको अपने आप से अब और बेहतर करना, इसी में उसका प्रयास कामयाब होते गया। कामयाब होता गया. इस मॉक से और अपने को अगले मॉक्स में और अच्छा करना है, हमेशा टॉप बन के रहना है, हमेशा प्लस प्लस पे ही रहना है। Okay. ये जो जर्नी उसका रहता था मॉक टेस्ट में, ये उसके लिए बहुत आपका सुपर बेनिफिशियल रहा उसके लिए। और मुझे एक चीज पूछनी है, आप इतना व्यस्त रहते होंगे, यू आर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द फार्मास्यूटिकल फर्म्स, और साथ साथ ये मॉम का रोल प्ले करना, डोंट यू थिंक वन इज एप्पल अनदर इज ऑरेंज, और इसको मैनेज करने में इट वुड हैव बीन अ रियली डिफिकल्ट टास्क, डोंट यू थिंक मैम? कैसे मैनेज किया आपने? ये तो एवरी इंडियन वुमन ऑलरेडी डू, because day to day she has to face many problems, है ना? This is by birth every Indian woman can do, balance between family and a business, and nowadays comes everyone wants to earn money, so Right, that's why it's a balance when you have to stay somewhere. right. Sometimes you have to pay attention to our squad, sometimes you have to pay attention to other side also. This can balance automatically, it can Automatically balance it if gets you. balanced. All right. So many things, and I mean, she's handling so much on her plate right now, and certainly, despite that, the way she is managing, Prinda ma'am, hats off to you from my side. Thank you And very much, sir. Surya, next question to you, dear. I just specifically want to understand, any moment that boosted your confidence immensely during this preparation journey. I think uh, there was last minute boot camp held before Indore examinations, and they conducted mocks for all the camps, and in those mocks I performed well, so that was a good sign. That was a good sign. Okay, so boot camp really helped. In fact, I'm getting to know it from people that the boot camps have really helped. So we conducted this time the boot camps before IPMAT Indore examination. We also conducted first round of mock interviews boot camp. I'm not. I visited Indore also over there. Over there we met. I'm quite sure during our one-on-one interaction sessions. Then we also conducted one more boot camp just before the interviews. 2-3 दिन पहले उसके पहले भी. So there were 3 boot camps that really help students. I would like to understand one more thing from you now, Surya. I mean, uh, how did exactly Supergrad Top Rankers helped you? I mean, what all did they do that you actually found that you could not have done yourself? Yeah. I think the faculty guided really well. They were very बहुत अच्छे से पता था कैसे मैनेज करते बच्चों को उनकी प्रॉब्लम्स, एंड दे वर वेरी एक्सपर्ट इन देयर सब्जेक्ट्स एज वेल, सो कुछ भी प्रॉब्लम आती थी तो सॉर्ट तो हो ही जाती थी. इसके अलावा रेगुलर मॉक्स वाज आल्सो समथिंग दैट हेल्प्ड अ लॉट, एंड there was always people who would help you out if you had any problem, so that. All right. I think, yeah, there are few people who speak very less, but they speak very effectively, and Surya is one of them, my dear friends. And next thing that should be asked from someone like Surya only, एक बहुत important चीज है, you cracked IFT last year. एंड रियली बहुत बड़ा बैगेज होता है, एक ड्रॉप ईयर लेना, आईएफटी जैसे इंस्टीट्यूट को छोड़ना, उसके बाद आईएम इंदौर निकालना और ऑल इंडिया रैंक 9th हासिल करना, दैट्स सूर्या फॉर यू गाइस. आई वुड लाइक टू आस्क योर स्ट्रेटेजी, बिकॉज अब वो स्ट्रेटेजी किसी और को काम जरूर आनी चाहिए. I think strategy is different for everyone, but something that should be there is you should always target much higher than the actual cutoffs.
because that helps to get into examination easily. Interviews are very subjective and you should never depend on that. Apart from which, uh, you will definitely understand your weak areas at some point. I knew it was English for me, and that was the reason I didn't qualify for the exam last year as well. And इस साल भी I tried to focus on it a lot, but weak areas ऐसे होते हैं कि उन पे काम करने का मन नहीं करता. अच्छा, I also did a little फिर bit. कैसे मैनेज किया? मैंने भी थोड़ा सा काम चोरी किया पर एंड में जाके इट वाज लाइक नहीं अब तो करना ही करना पड़ेगा. ही है, ओके। तो इट वाज देयर. इंग्लिश मम्मी को में देखा आई है वाज कितने सारे काम करती हैं, तुम्हारी स्टडीज के पीछे भी लगी रहती हैं, उधर कंपनी वाले को भी डांट लगाती है, अरे कैसे नहीं हो रहा, आगे बढ़ाओ। सेल्स भी देखती होंगी, शी इज मैनेजिंग एवरीथिंग, राइट? तो फिर, हाँ, फिर क्या हुआ, बताओ आगे। English में I would suggest कि reading really helps. Reading regularly is something that helps. Apart from which, uh, there are people who believe that practice is the key, but I think concepts are the key. So what I do is less questions but more concept clarity. Whatever you are studying, you should be aware of that concept thoroughly. So that is something that helps. That is की All right. So, two prominent points being made by the girl over here. The first one being that, yes, you may feel it leaving that particular area that's actually weak. आपका मन करता है कि उस पे काम ना करो. But despite that, you need to work very hard on your weak areas. सबसे पहली बात है. And that's crucial for everyone that, your weak areas are the things that may pull you down, but unless until you fight with them, you do not know what is written for you guys. So same was written for Surya as well. Second point she's making that every concept should be thorough. अगर concept अच्छा है तो certainly सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. Next question to you, ma'am. मतलब because I would like to know प्रणीता मैम आपसे कि आपने भी क्लोजली ऑब्जर्व किया सूर्या की जर्नी को. तो व्हाट डिड Yes. यू सी, और कैसे सुपरग्रेड टॉप रैंकर्स ने मदद किया, कैसे उसने खुद से कैपेबल होकर चीजें यहाँ पर करी, उस जर्नी को थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ करके बताएं यहाँ पर तो. जैसे सूर्य ने बताया कि टीचर्स का जो सजेशंस था, जो मॉरल सपोर्ट था, एवरी क्वेश्चंस के लिए जो मीन्स प्रॉब्लम्स आते थे, वो ऑन दैट टाइम इफ यू सॉल्व ना, तो मीन्स बच्चा बहुत खुश हो जाता है. अगर वही आपने बोला कि हाँ कल करेंगे, बाद में करेंगे, तो बच्चे को वो जो है ना क्वेश्चन दिमाग में रह जाता है. तो मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ सुपर ग्रेड्स के लिए कि भाई जितनी भी क्वेरी उनकी रहती थी उसी वक्त उनकी वो सॉल्व होती थी. वो मेन पॉइंट रहेगा कि हाँ मीन्स बच्चों को ये रहता कि हाँ मीन्स क्वेरी निकालते रहे. ऐसा उनको एक सर भी बहुत अच्छे थे उनके, मैं तो नोटिस कर रहा था, मयंक सर. वो और बोलते थे उनके कि हाँ आप अपनी प्रॉब्लम्स तो लेके आओ मेरे पास. दैट इज वेरी अंडरस्टूड. मीन्स बहुत दैट अच्छा क्रिएट्स लगा रेस्पेक्ट. कि ये कोई सर अब खुद बोलते हैं कि हाँ हेल्प करते हैं बच्चों को. मैंने एक चीज और सुनी है, एंड आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम बोथ ऑफ यू, इनफैक्ट सूर्य से, कि राणा मैम ने बहुत मोरल सपोर्ट भी दिया है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर जर्नी. शी हैज रियली प्लेड अ वेरी वाइटल रोल. मैं उनसे नहीं सुना, मैंने किसी और से सुना, बट आई रियली वांटेड टू ब्रिंग दिस ऑन दिस पर्टिकुलर टेबल कि व्हाट रोल डिड शी प्ले ओवर हियर. एंड इसलिए मैंने इस इंटरव्यू के साथ भी स्टार्ट किया, बिकॉज इफ टू लेडीज आर बाय योर साइड, एक प्रणीता मैम इस तरफ और इस तरफ राणा मैम, तो बस फिर तो सूर्या की फतेह थी. प्लीज इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, सूर्या. शाम तक तो राणा मैम से इतनी बात नहीं हुई पर आफ्टर इट वाज ओवर एंड इट वाज टाइम फॉर इंटरव्यूज राणा मैम वाज द मेन पर्सन देन. एंड उसके बाद राणा मैम से ही बातचीत होती थी, सब कुछ होता था. बहुत बीच बीच में दिक्कत आती थी क्योंकि इंटरव्यू वाज नॉट समथिंग जो मेरा स्ट्रेंथ है, राइट, तो राइट, राइट. इट्स वेरी वीक एट दैट. और शुरू में तो मैम से भी मैं फ्रैंक नहीं थी, फिर धीरे धीरे हुआ. फिर मैम अच्छी से गाइड करती थी. मैम वाज लाइक चिंता मत करो, इट विल बी ऑलराइट, जो होगा अच्छा होगा. आई कुडंट find any formal shoes, so she personally took me and she brought me the formal shoes herself with a nearby shop. So yeah, she was really helpful. दैट्स ग्रेट. ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, आई थिंक दैट क्रिएट द डिफरेंस. आई मीन आपको एक सपोर्ट मिल जाए हर पॉइंट ऑफ टाइम पर, एंड शी क्लियरली मेंशन एंड इट्स विजिबल आल्सो. माय स्ट्रेंथ लाइज नॉट इन इंटरव्यूज, बट समबडी कमिंग इन और अपनी स्ट्रेंथ के फॉर्म में वो प्रोवाइड कर रहा है,
So I think Rana ma'am played a crucial role over there. अब राना मैम का बात के अराउंड बात हुई, इंटरव्यूज के अराउंड बात हुई, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि इंटरव्यूज की जर्नी कैसी थी, क्योंकि यस यू वुड हैव स्ट्रगल्ड दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई रियली वेरी वेल नो दैट. Interview journey was not the absolute best because Right. I had really different expectations from interview. I was like, सब कोई तो करा ही देगा and I just have to go there. But it was a lot self-dependent और बहुत कुछ effort करना पड़ा था क्योंकि 11th 12th का कुछ याद नहीं था. CAT राइट, was हाँ very वो तो और important. डिफिकल्ट होगा क्योंकि ड्रॉपर रहे. ठीक है, फिर. Yes, academics को cover up करना was in itself a very big task. Apart from which, general knowledge also it was not at all at home. So that was there. Apart from which, the main problem was my communication. So it was always a problem. Always been shy. Always was awkward in front of people. So maybe interviewers who have said they it was the same thing कि mock interviews में कि body language अच्छा नहीं है, बहुत डर डर के बात कर रही है, so it was और a वहां से bit. लेकर ऑल इंडिया रैंक 9 निकाल लेना फिर, है ना. सर फैंटास्टिक जर्नी यू हैव हैड सूर्या, मतलब मुझे मजा आ रहा है ये सुनने में. द जर्नी शी हैज ओवरकम एवरीथिंग गाइस. जस्ट लिसन टू हर वेरी केयरफुली. खासकर वो इंटरव्यू वाला फेज बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, बिकॉज एक तो सबसे पहले एक ड्रॉपर. Secondly, she herself is making a point that she is a bit introvert and doesn't like talking to people that much. You know, that becomes quite difficult for an individual who, someone like Surya would prefer a college जहाँ पे interviews नहीं होते हैं. But she fought with that particular part so well and finally came out as a winner and all India rank 9 in front of you all. Ma'am, I would like to understand कि uh, बहुत सारे पेरेंट्स सुन रहे होंगे आपको अभी, प्रणीता मैम, और आपका बहुत बड़ा रोल रहा है. कुछ चीजें बोली गई हैं इस मंच पर, कुछ चीजें नहीं बोली गई हैं, बट समझी गई हैं. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बाकी पेरेंट्स को, आने वाले जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं आपको, और ये काफी सालों तक ये इंटरव्यू देखा जाएगा, उनके लिए एक एडवाइस आपकी तरफ से आनी चाहिए जो. ऐसी भी सिचुएशंस हो, अपने वार्ड के साथ हमेशा सपोर्ट देना चाहिए, सपोर्ट रखिए. राइट. क्योंकि सही में बच्चा डरता है जब इंटरव्यूज होते हैं, तो जैसे वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है, इतनी छोटी छोटी बातें होती है. तो मैं वही कहूंगी कि डू नॉट फोर्स, राइट. let her explain her point, and then what you want to say, please explain you with as a friend her, एज अ फ्रेंड. ओके. लेकिन इस जर्नी में ना always. कुछ डिसीजंस भी लेने पड़े, जैसे आईएफटी छोड़ना पिछले साल एक बड़ा डिसीजन था, तो उसमें भी आपका सपोर्ट रहा. नहीं, एक्चुअली मैं तो उसको फोर्स में नहीं रहा था लास्ट टाइम कि आईआईएफपी है तो कोई बात नहीं, आईआईएफपी काकीनाडा से आईएफटी करो, कोई काकी बात निकल जाए, ठीक है. नहीं. हाँ, लेकिन शी इज नॉट रेडी फ्रॉम दैट कॉलेज. ओके. एक्चुअली लास्ट राउंड सितंबर में उसका सिलेक्शन हो गया था आईआईएफपी काकीनाडा विद इन. मैं तो टॉप रैंकर्स को भी यही बोलूंगी, थैंकफुल रहूंगी कि इन दिस 4 मंथ्स जर्नी, हाँ, यानी जुलाई से लेके जो उसका सितंबर तक का ही जर्नी था, उसी में उसने कॉन्फिडेंस लेवल आ गया था कि कि भैया मैं जो आईएम अपन इंदौर ही जाऊंगी. आया. अच्छा. हाँ, आई कैन, आई कैन क्रैक आईपीएम इंदौर. उसने मेरे को सीधा बोल दिया, एंड ओके. गिव मी 1 year ओनली, सी शेयर्स, गिव मी ओनली 1 year, आई विल डू माई आई विल डू माय बेस्ट. बेस्ट. ओके. तो मीन्स फैंटास्टिक पॉइंट. फेथ रखना कि बच्चे के मीन्स डिसीजन में फेथ रखना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भाई उसने जो पॉइंट रखा उसमें मैंने फेथ. उसको बिल्कुल मान, ये बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, वैसे होती नहीं है ऐसे इंटरव्यूज में. यस मैम, नाउ फ्रॉम यू टू सूर्या. सूर्या, एक एडवाइस जो तुम्हारी तरफ से, बिकॉज यू नो ये जर्नी बहुत ज्यादा हैपनिंग रही है. सो क्रैकिंग, नॉट गेटिंग इनसाइड आई एम फर्स्ट ईयर, फिर धीरे धीरे तुमने सुपर क्रेडिट्स को ज्वाइन कर लिया, जैसे मैडम बता रही है अभी, पिछले साल ही जुलाई में. फिर जुलाई से लेकर सितंबर में तुम्हारा आईएफटी काकीनाडा का रिजल्ट आ जाता है, उसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है. ओके, एंड देन फाइनली यू गेट इनसाइड आई मीन दिस पर्टिकुलर ईयर, एंड दैट टू ऑल इंडिया रैंक 9th. आई थिंक this has been a fabulous journey and everybody would be would be praising this particular journey. तुम्हारे तरफ से एक एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स who are listening to you right now, क्योंकि अगले साल वो they are going to face the same thing. Advice would be कि do not expect anything, just work your hardest you can, and there is always a little bit of destiny there. So there are a lot of people, नहीं होता है कभी कभी, पर अपना ट्राई बेस्ट करने से कुछ भी बुरा नहीं होगा. कम से कम इतना रहेगा कि
आपने पूरा किया. That is all that it takes. You to do your complete effort 100%. That is what is going to give you self satisfaction more than any result. Clear points being made. Only one advice: efforts plus ordinary is equal to extraordinary. Thank you, Pranita ma'am. बहुत मजा आया आपसे Thank you. बात कर. And Surya, thank you for your some small talks but sweet, small but sweet talks. Thank you for joining us, and I think this interview will be remembered for long. Thanks a lot, audience. Thank you, everyone.